Hello everyone. This is Khetan, a member of my student club podcast team, currently working in BDO Mumbai. Today we have a very special guest amongst us, the always shining and smiling face, the editorial head of Students Council of Sikasa Indore, the best paper presenter at the national conference, the MOC of Kolkata Conference and the host of Sikasa Events, the founder of Telegram channel which guides and helps students. Introducing you all to our all-rounder personality, Ishwin Kaur. Hi Ishwin, how are you? Hello, Kushi. I'm good. How are you? I'm good, thank you. Thank you so much for accepting our invite. I'm sure that this It's such a podcast good to will be help here. CA students a lot. So, Thank you. as we have the editorial head with us, so the very first question which I would like to ask you is that what are newsletters and what type of articles can you contribute in a newsletter? Okay, so newsletters is a very good question, and I think that a lot of people need to know about this. Newsletters are like official publications of ICAI, which is released every month for members as well and for the students too, in which you will find articles and a lot of knowledgeable content that is shared by the people of the community. ऑफन आपने सुना होगा कि सीए स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छे होते हैं Yeah. तो अब नाउ इट्स द अदर वे राउंड एंड इसका प्रूफ आर द न्यूज़लेटर्स because newsletters show you that every CA student has got some unique talent apart from managing their studies. So in newsletters, you'll explore and dive into the knowledge shared by others, where people showcase their unique abilities, their talent, and people contribute articles, poems, storytelling, diary entries, photography, and whatnot. So a lot of skills to see. So how do we come to know about this? कि कहाँ, like if someone like me, I want to contribute, so how would I do Yeah. that? You can find that on every Sikasa page or like Sikasa, Nikasa. All these are many associations of ICI. So they keep on posting about their articles on their Instagram page, their WhatsApp groups you can join. So that in that you'll find that when do they need their articles. Okay, great. So now moving to another aspect, as we have the best paper presenter in the very first go itself. So I would like you to shine on the throw some light on the topic कि how did you achieve this? Like सबसे पहली बात तो ऐसा होता है कि सिलेक्ट ही नहीं होता है ऑडिशंस में. सब बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि यार सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है एंड आपका सिलेक्ट होके एंड फर्स्ट गो में यू अचीव द बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन अवार्ड. सो सम टिप्स फॉर आवर ऑडियंस. Okay, so thank you so much for highlighting that achievement, first of all. And yes, that's true that once I got a message from a person कि उसने 3 बार try किया but उसका तीनों बार में reject हो गया. So indeed, that's a thing, that's a difficult thing to ace it in auditions and then in finals also. So my suggestion, first of all, you should see the parameters. You should be knowing the parameters on which you are judged and the marking is done. So that अगर आपको पता होगा कि मुझे इस पे जज किया जा रहा है तो मैं इसमें स्कोर करने के लिए ध्यान रखूंगी कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना है. So सबसे पहली चीज जो सबसे पहला पैरामीटर और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, that is the content and the style of delivery. Whenever you are delivering, you are presenting your paper, तो आपका content बिल्कुल ही proper और legitimate होना चाहिए. And style of delivery में make sure that you include voice modulations. अगर आप straight forward होके बस बोलते जाएंगे तो it will appear monotonous and obviously audience will lose interest. So, and second thing, when you present your paper in the finals, जब आप auditions में select हो जाते हैं और आप final में paper present करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो PPT को synchronize नहीं कर पाते हैं अपने content से. तो PPT कुछ अलग चल रहा है पीछे, आप कुछ अलग बोल रहे हैं और ऑडियंस को कुछ और ही समझ आ रहा है. तो ये गड़बड़ नहीं हो और आपकी मार्किंग नहीं कटे. दैट इज व्हाई यू हैव टू सिंक्रोनाइज योर पीपीटी एंड योर कंटेंट वेरी वेल. तो इसके एक बार पहले ही सब लोगों को प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए. एंड लास्टली आई वुड से कि एक्सप्रेशंस कैसे आने चाहिए और आपका टाइम लिमिट से आप स्ट्रिक्टली आई विल से पीपल हैव टू take care that they have to adhere to the time limit because negative marking हो जाती. कई बार लोग 1-2 मार्क्स से छूट जाते हैं and that is because you exceed the time limit. So with that, and always keep a smile on your face to leave an everlasting positive impression in the auditions and in the final as well. Yeah, that's great. And Thank you.
या एंड थ्रू दिस आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल वन थिंग कि बहुत सारे बच्चों का ऐसा होगा कि स्कूल में वो लोग नहीं बोल पाए होंगे, ये मेरी भी चीज रही है कि स्कूल में इतना अपॉर्चुनिटीज नहीं मिला, बट ऐसा नहीं है कि जिनको स्कूल में नहीं मिलता वो आईसीआई में भी नहीं बोल सकते हैं। तो जैसे मैंने किया वैसे आप लोग भी कर सकते हैं। इट्स जस्ट अबाउट प्रैक्टिस एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ओके, सो आपने कितने बार प्रैक्टिस किया था, एक बार हमें ये तो बताइए। I think I did not count it. It was so many times. But मोटा मोटा ये कह सकता है कि अच्छे से 3 से 4 बार आप अपने कंटेंट को, अगर आपने खुद बनाया कंटेंट तो आपको याद तो रहेगा। तो मेक श्योर कि आप कंटेंट खुद बनाए और 3 से 4 बार उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। डोंट डू दैट रॉट लर्निंग, बिकॉज बहुत लोग रट्टा मार के जाते हैं फिर भूल जाते हैं कि क्या था इसके बाद। तो समझ के जाइए, 3 4 बार पढ़ के जाइए, विल बी एबल टू डू इट। एंड एनी टिप्स फॉर द ऑडिशन वाला जो वीडियो होता है 2-3 मिनट का, वो कैसे बनाना चाहिए, एंड उसका जो हमें विच वी हैव टू सेंड इट टू द टीम, द प्रेजेंटेशन एंड द वर्क पेपर, सो उसके लिए एनी टिप्स फॉर दैट? Yeah, as you said that audition video is only of 2 to 3 minutes, तो इसी से आई थिंक ऑडियंस को जिस्ट मिल गया होगा कि ज्यादा टाइम है नहीं अपने इम्प्रेशन जमाने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको 2 3 लाइंस का इंट्रोडक्शन खुद का देना है। एंड अगर आपने कोई अचीवमेंट पहले से लिया हुआ है तो और भी अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। एंड उसके अलावा जो भी आपने टॉपिक चूज किया है उसका 2 3 मिनट मतलब 3 से 4 लाइंस अच्छी सी वेरी स्ट्रॉन्ग लाइंस यू शुड कीप इन दैट कंटेंट। इससे क्या होगा कि एक 2 3 लाइन का आपका इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद आप जितना स्ट्रॉन्ग कंटेंट डालेंगे उतना सामने वाले को बोनस पॉइंट से कि उसको आपको क्यों चूज करना चाहिए। बिकॉज हाँ फॉर एग्जाम्पल जैसे कोलकाता में अभी जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैंने एमओसी किया था, वहां पे 200 बच्चों ने अपने पेपर्स दिए थे। एंड उन 200 में से ओनली 12 to 15 आर सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो आप समझ सकते हो कितना हैवी कॉम्पिटिशन है ये। हाँ। सो कीप योर कंटेंट वेरी स्ट्रांग इन दैट आई वुड से। उसमें कुछ कोट्स डाल लो या उसमें कुछ ऐसी चीजें डालो जिससे उनको लगे कि यार इनको सिलेक्ट कर लो। एंड अगेन वो सारी टिप्स तो आपको रखनी है, एक्सप्रेशंस एंड वॉइस मॉड्यूलेशंस ऑल दैट। वाओ, थैंक यू सो मच अश्विन, आपने बहुत ग्रेट टिप्स शेयर की, एंड आई होप दैट दिस टिप्स विल हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स टू एज देयर पेपर प्रेजेंटेशंस। सो अब मूविंग टू नेक्स्ट, जैसे आपने बोल ही दिया है कि आप एमओसी किया था आपने कोलकाता में। सो मतलब एक पेपर प्रेजेंटेशन एक अलग एस्पेक्ट होता है, एंड एमओसी इज अ टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट। ड्यूरिंग एमओसी मतलब कोई भी एकदम से आ जाता है, एंड देयर आर एन मूवमेंट चेंजेस। लाइक मैंने एमओसी की थी मुंबई में, सो इट वाज लाइक कि गेस्ट ही चेंज हो जाते हैं एंड मूवमेंट पे, फिर यू हैव टू चेंज द स्क्रिप्टिंग, एंड इधर मतलब बैक स्टेज में बैठ के आपको वो लिखना होता है। सो हाउ डू यू टैकल ऑल दैट चेंजेस? मतलब इन अ मूवमेंट यू हैव अभी कुछ और हो रहा होता है, देन इन अ मूवमेंट कुछ और होने वाला होता है, सो एंड मूवमेंट पे हाउ डू यू टैकल? या Yeah, I agree to this actually, and बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। as most of the people might be knowing MOC, that is Master of Ceremony, जो कि एंकरिंग है। तो ये बहुत अच्छा तो लगता है करने में, बट बहुत टीडियस टास्क है, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन तो आपको पता है एक साथ 15 मिनट आपको बोलना है, कोई रोकेगा नहीं, कुछ चेंज नहीं हो सकता। बट उसमें एमओसी में आपको अचानक वो बोलते चेंज हो जाता है। या सो दैट स्क्रिप्टिंग एंड अ लॉट ऑफ रीस्क्रिप्टिंग एक्चुअली हियर। सो मेरे टिप्स 3 बेसिकली आई ऑलवेज कीप इन माइंड व्हेन एवर आई डू एमओसी। दैट इज सबसे पहले बी अवेयर, कीप योर ईयर्स एंड आईज ओपन। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपने एक बार अपना पार्ट बोल दिया तो नाउ यू कैन सिट बैक एंड रिलैक्स। ऐसा नहीं होता है एमओसी में। एंड सबसे बड़ी चीज तो मैं ये सोच के चलती हूँ कि आईसीआई जैसे खुद एक लाइन बोलता है कि या येषु सुप्तेषु जागृति, ये आपने सुना ही होगा। हाँ सो yeah, इस लेवल की अवेयरनेस यू आर रिक्वायर्ड टू कीप, नॉट ओनली इन सीए स्टडीज बट ऑल्सो इन सीए इवेंट्स। अगर आप चाहते हो कि इवेंट सक्सेसफुल हो, जैसे एमओसी है, तो जब तक इवेंट चल रहा है 24/7 आपको अवेयर रहना है, आपको देखना है कि स्टेज पे क्या चल रहा है, उस अकॉर्डिंग मेरे को चेंजेस अगर कोई दिख रहे हैं तो सबसे पहले मैं उन चेंजेस को पहले ही इनकॉर्पोरेट कर लूं। दूसरी चीज ये है कि कुछ लाइंस आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे आपने अगर 2 से 3 बार एमओसी कर ली तो आपको पता है कि एमओसी में कुछ चेंजेस कॉमन रहते हैं। जैसे कोई इवेंट को, कोई गेस्ट को उन्होंने इनवाइट करना है अचानक से, या कोई सीक्वेंस चेंज हो गया तो आपको कैसे करना है, या फिर कुछ लोगों की पोजीशंस रहती है तो आप पहले से ही लिख लो कि कौन वाइस चेयरमैन है कौन चेयरमैन है। तो आपकी वहां पे एंड मोमेंट पे जब वो बोलेंगे कि अचानक से ये गेस्ट आ रहा है, तो आपकी गड़बड़ नहीं होगी कि यार उसकी क्या पोजीशन थी या क्या लिखूं क्या बोलूं। तो वो आपका जो लास्ट मोमेंट टेंशन और थोड़ा सा गलत हो जाती चीजें वो नहीं होंगी। एंड थर्ड आई विल से कि बी कॉन्फिडेंट। मतलब अगर आप इतने बड़े इवेंट्स की एमओसी कर रहे हो तो बिलीव कि आप कर सकते हो।
So confidence is the key and perception is reality. So keep that confidence in yourself. Very great line shared by Ishwan. And to add on to this, I would like to say कि अगर कुछ गड़बड़ भी हो रही होती है ना, so keep a smile on the face. तो मतलब ऑडियंस को लगता Yeah, है कि हाँ ठीक है चल रहा है, मतलब you have to just engage with the audience. So that's one thing. right. That's very true. Keep a smile always. कोई भी हो MOC paper presentation. जैसे अभी खुशी के चेहरे पे इतने स्माइल है बिल्कुल वैसे ही. इतने ग्रेट पर्सनालिटी हमारे साथ ज्वाइन हुए तो स्माइल तो होगी. Thank you. So moving to next, I would like to ask you that what is the recognition you get for participating in such IC activities? Like मतलब some people say कि यार इसका फायदा क्या होगा इतना ये सब करके. So how does it add stars to your CV and what kind of recognition you get as you are very Okay, active in so all the Sikasa events? So yeah. So this is a very important question. And I guess everybody needs to know this because अक्सर लोग मुझसे भी पूछते हैं कि आपने कमिटी ज्वाइन की है तो उसका क्या बेनिफिट है या क्यों हमें भी कमिटी ज्वाइन करनी चाहिए. So सबसे पहली बात तो through this active participation the recognition that you get it is surreal, it is unmatchable. मतलब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रिसेंटली आई कैन टेल यू कि ड्यू टू एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सिकासा कमिटी एज एडिटोरियल हेड for the year 2024 and also as host for many Sikasa events. I got the opportunity to attend the 74th annual function of ICAI at Vigyan Bhavan in New Delhi. Thank you so much. So ये अपॉर्चुनिटी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है या ये जो इवेंट है ये इतना स्पेक्टेकुलर क्यों है, क्योंकि हर सिटी से कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो ये इवेंट में इनवाइट किए जाते हैं. और ये बच्चे कौन हैं? ये बच्चे वो हैं जो कमेटी का पार्ट है. सो हियर कम्स द वेरी फर्स्ट रीजन कि आपको क्या रिकॉग्निशन मिला है, कि क्यों इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसे इवेंट्स करो, ऐसी कमिटीज में ज्वाइन हो. क्योंकि जब आपका हार्डवर्क यू गेट रिवॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ लाइक वी गॉट अवार्ड फॉर द बेस्ट ब्रांच इन मेगा कैटेगरी एंड सेकेंड बेस्ट ब्रांच ऑफ सिकासा. तो वहां पे हमें बुलाया गया और हमने एनुअल फंक्शन अटेंड किया एंड वी मेट सो मेनी एस्टीम्ड पीपल. वी मेट द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआई, द फॉर्मर प्रेसिडेंट नाउ सियानी के तलाटी सर. तो व्हाई टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी? इतनी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको हर बार नहीं मिलता है. सो एंड डेफिनेटली सीवी में भी ये बहुत हेल्प करता है. जब आप देखते हो जैसे बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स का सीवी है, सब लोग ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, तो व्हाट विल मेक यू डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर सीए स्टूडेंट्स? it is this events, because overall growth is not possible without these events. And even मैं जैसे अभी मैं दिल्ली गई थी तो मैंने सियानी के तलाटी सर को सुना था, तो मैं उनकी ही एक लाइन कोट करना चाहूंगी बिकॉज आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी कि वो ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करे. एंड उनका मोटिवेशन के लिए सबसे अच्छी लाइन तो सर की है, खुद प्रेसिडेंट सर के, फॉर्मर प्रेसिडेंट, कि बिलीव दैट आई एम द आई इन आईसीएआई. सो शुरुआत भी आपसे, अंत भी आपसे, इंस्टीट्यूट भी आप, इंडिया भी आप. जय हिंद, जय आईसीएआई. Yeah, ये Aniket Talati sir की this is the famous line. Wherever he goes, he makes sure to say this line, and that's very true. कि without us, we are the economist, like economy हमारे of the country का, we have the whole of it. So like Exactly. CAs तो सभी बनेंगे आगे जाके, but what distinguishes you is the participation in this extracurricular activities and the networking which you get through these activities like immense. मतलब आप लोगों को जो नए नए लोगों से मिलने, मतलब you come to know that where do you stand when you Exactly, meet and you such learn a people. lot. Yeah, You learn a lot from others also. Like I am learning from you and many other people that I keep on meeting. So हर चीज matters. yeah. So the last question which I would like to ask you is, like, what are the 3 tips which you would give to our audience ki by saying these tips your speech will become impactful? मतलब एक अलग लोग पे ऐसा impact छोड़ के जाना है, तो what 3 tips which you would like to give? Okay, so some general tips that I can give for that is first is a rule that I keep in my mind whenever I go in any public event. That is 3 seconds, 30 seconds, and 300 seconds rule. So this is basically that if you appear confident in your first 3 seconds, then people will listen to you for the next 30 seconds.
And then if you are confident for those 30 seconds, if your presentation is good, they decide that whether they have to listen you for the next 300 seconds or not. So the key is that presentation matters. Try to keep it top notch. या And तो second शुरू is में that, ऐसा कुछ कर दो ताकि लोग आपको आखिर तक सुने. yeah, definitely. And वो शुरू में क्या करना है, that you can use is rhetorical techniques. जैसे कि आप अपने क्वेश्चंस, मतलब ऑडियंस से आप क्वेश्चंस पूछिए कि डू यू नो कि जीएसटी के कलेक्शंस इस साल कितने हुए, या पिछले साल से कंपैरेटिवली अब कितने हैं. सो इस टाइप के क्वेश्चंस यू कैन यूज टू कीप देम एंगेज्ड. एंड एक वो क्यूरियोसिटी रहती है, तो वो लोग आपको सुनते हैं कि अच्छा कुछ अच्छा बता रहे हैं, कुछ ऐसा बता रहे हैं जो हमने मॉड्यूल्स में नहीं पढ़ा है. Right, so you Yeah. can ask those type of questions. And then you can use repetition also. It is a very powerful technique. जैसे मुझे कुछ emphasize करना, कोई मान लो कोई नया amendment है जिसके बारे में बहुत लोग को नहीं पता है, I can repeatedly use it, or I can say some fact, ताकि एक वो repetition से लोगों का ध्यान जाए मेरी speech की तरफ कि मैं क्या बोल रही हूँ. So these type of techniques and rules you can use so that your speech becomes impactful and powerful as well. Oh, that's great. बहुत अच्छी टिप्स शेयर करी आपने. And now I would like to request you to say something about it. As we know, you have a Telegram channel which helps and guides students. So, आपके Telegram channel के बारे में आप कुछ कहे. Like, what is it? What type of content do you post in it? And like something about your Telegram channel. Okay, so my Telegram channel, I found it in January 24 itself. And in that, I basically keep on sharing about the interview techniques. Like I'm an article assistant and I am practicing an audit right now. So you can see that I post questions, and I also post about paper presentation. जो achievements मेरे हैं, मुझे लगता है कि मैं fraternity को उनके बारे में guide कर सकती हूँ. जैसे कि MOC की कभी किसी को techniques चाहिए, पेपर प्रेजेंटेशन किसी को रिव्यू कराना है, या इंटरव्यू से रिलेटेड थोड़ा बहुत क्वेश्चंस हो गए इस तरीके से. एंड कभी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिखी, जैसे सूरत ब्रांच की कमेटी बनने वाली है, ऐसा कुछ भी, एनी अपॉर्चुनिटी दैट आई कैन सी एंड आई थिंक मैं ले सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं ही क्यों, सब लोग ग्रो करें एक साथ. दैट आई पोस्ट इन माय चैनल. That's a wonderful thought, Ishwar. Like you are helping CA students, so that's very great. Like सब नहीं कर पाते हैं ये, very few people in the community do this job and you are doing this. Hats off to you. Like thank you so much. You are doing such a great job for the entire community of CA students. Thank you, Khushi. Thank you. So here, like I am thankful to you for joining our podcast and sharing such valuable insights with all the people watching this. And I'm very sure this podcast will help and add value to everyone who is watching this. So, And and I hope so. I request everyone, whoever is watching this, to please subscribe to the Telegram channel of Ishwin. The link is in below comments, and also subscribe to My Students Club channel. So, Thank you, Khushi. Thank you, My Students Club, for having me. It was such an honor. thank you so much. And It was great. I also request कि बहुत सारे लोग इस club को join करें, because I have seen this club and it's helping people immensely, articleships related and about everything. So ये लोग भी काफी help कर रहे हैं community को, and that's really worth appreciating. So please everyone subscribe to My Students Club and also to my channel if you find it helpful. Thank you so much, Ashwin. Thank you for your time.